ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨ ਫੋਕਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਵਰਿਸ਼ਠ ਯੋਧਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਟਰਨਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿਸ਼ਠ ਯੋਧਾ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੇ ਨਾਲ। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, भारत माता की जय वंदे मातरम। I would like to thank our veterans who have come here today to give their blessings and accept our small token of appreciation for their service to the nation. The Varisht Yodha program aimed to recognize the sacrifice and services of our veterans. We started this initiative last year by honoring 7 ex-servicemen above the age of 90 years, 5 of whom are present between us today. The time I got to spend with them was memorable for me personally. The stories I heard, the emotions I encountered, the pride and honor of having served in Indian Armed Forces that I felt were overwhelming. ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। We have received a congratulatory message for all of you from none other than Honorable Raksha Mantri of India, Shri Rajnath Singh Ji. So I would like to read his message for all of you. I'll begin. I'm delighted to learn about the initiative by the Consulate General of India in Toronto, Varisht Yodha, that aims to honor the Indian origin veterans living in Canada above the age of 75 years as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav to mark 75 years of India's independence. The Varisht Yodha program recognizes the sacrifice and service of our veterans who have valiantly and selflessly devoted themselves towards the service of India. It is a celebration to honor them for their patriotism, dedication, and willingness to serve and sacrifice all for the nation. We remain committed to taking care of our veterans in the same way as they have taken care of the security of our country. The decision to roll out one rank, one pension scheme, ending decades-long wait, was testimony to our government's unwavering commitment towards the welfare and satisfaction of the veterans. We have introduced several new services to assist our veterans, such as eSehat portal to provide telemedicine services and the interactive voice response system to address the problems faced by the ex-servicemen, which proved useful during the recent COVID-19 pandemic. It is heartening indeed that our veterans living in Canada remain the flag bearer of the traditions of our armed forces and continue to inspire the Indian community there with their patriotism and dedication. I thank them for their service and salute their dedication to the nation. I am confident that they will continue to be a living bridge between India and Canada and contribute towards strengthening our bilateral relations. Jai Hind. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨਰੇਬਲ ਅਜੇ ਬਿਸਾਰੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਅਟੈਸ਼ੇ ਟੂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਨੂਪ ਸ਼ਿੰਗਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਟਰਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। I will start with requesting you all with a joshful Jai Hind. I will say Jai Hind thrice. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Why thrice? Because I saw the vision of Air Force Association, Naval Association, and other association. All three had a common thread
of integration from members from all three services, which is great. And we are moving on that way in India too. As the saying goes, there are no ex-soldiers. Our title is earned. What is earned is never given away. Therefore, it always remains with us. Also, as you all know, defense services is not a profession, it is a way of life which you all have lived and are living. The contribution of, I saw the list, 104 years old, Commander Ghai, 99, running 100, and so many more. It shows that yes, it's indeed a way of life. All of you, what data we have actually seen through the 1971 operations. And that is the only example of the kind of victory we had in the recent times, in the modern warfare, which is absolute, which is decisive, in which 90,000 plus troops surrendered. That speaks of the integration of three services, which we have seen over here too. The kind of foundation laid by you all ensured that defense forces grew and growing. And now, as you all know, we all are integrating into theater commands, growing up, and will continue to grow with your blessings. With so much of veterans, with so much of experience, it's actually indeed a privilege, and we'll look forward for this interaction in future too. I'm Brigadier Shingal. I'm based in US and accredited to Canada too. For last 18 months, I could not come more frequently because of COVID-related restrictions. But henceforth, I'll be coming here more frequently and interacting with each one of you. Thanks. And that's a saying that a soldier always remains a soldier. They are forever. They only fade away. They never die. Thank you. These veterans, now having come to इन कंट्रियों में आके इनकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो डिसिप्लिन है, ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, और हर एक हिंदुस्तानी के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट है. इसलिए आज आ नहीं सके. हम ऐसे एक वेटरन यहाँ पे 2 दफ़ा MP भी बना कनाडा का, वो बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है. अदरवाइज ऑल्सो इंडियन जो डायस्पोरा है वो वेटरन्स को रिस्पेक्ट करता है. आज काउंसलर जनरल ने इसका एक हमें एग्जाम्पल दिखा दिया. कनाडा के साथ हम अगर लिंक करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा इंडियन डिवीजन, फिरोजपुर डिवीजन, लाहौर डिवीजन, उसके लिए आर्टिलरी ब्रिगेड ने जो 4 कैनेडियन इन्फेंट्री डिवीजन से उनको सपोर्ट दी थी. और बहुत सी बैटल्स में यूरोप में इंडियन सोल्जर कैनेडियन सोल्जर के साथ शोल्डर टू शोल्डर लड़े हैं. आप कभी भी पुराने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कैनेडियन वेटरन से बात करें, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जब इंडियन आर्टिलरी ब्रिगेड ने उनको फायर सपोर्ट दी तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक रेनिंग हेल्स. सो दे आर ग्रेटफुल. सो हमारी टाइज हैं कनाडा की आर्मी के साथ, और कई दफ़ा हम मिलते भी रहते हैं उनको. Today is a day to celebrate India's journey, India's 75th anniversary, and that is a moment of great pride for us. And especially, as Brigadier Heald said, we recognize the services and the sacrifices made by all our veterans here today. Looking at this journey, I was reflecting that all the battles we fought in the 20th century, particularly for an independent India, we stand on the shoulders of that ability to defend our nation and build our nation as we build a much stronger nation in the 21st century. So all the battles of the 20th century, and I met Commander Ghai today, 99 years old, and such a privilege to meet him. But I was reflecting that there are
people in this room with memories and experiences in all the battles that India fought in the last century. ਸੋ ਇਨ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਰਿਸ਼ਠ ਯੋਧਾ ਵੈਟਰਨਸ ਫੈਲੀਸੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Next, we would like to call upon Shri Naib Subedar Gurdail Singh Garewal ji. He's 103 years young. Next, we would like to call on Subedar Major Pritam Singh Dhaliwal ji. हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली मेजर दर्शन सिंह संगेरा जी नहीं है इस वक्त। Next we have Captain Kuldeep Singh Grewal ji. मुझे यूएनओ फोर्सेस में मौका मिला गाज़ा में। वहाँ 6-7 और कंट्री के भी सेना थी, लेकिन वहाँ पर हमारी यूनिट जो थी उसको काफ़ी मीन्स यानी जो भारतीय सेना थी उसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला और काफ़ी बहुत ज़्यादा उसने अच्छा काम किया। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं है। 1971 वार में, बांग्लादेश वार में मैं 4 गार्ड के साथ था, जो कि यूनिट सबसे पहले ढाका में आई है। जो उसके कमांडर कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल हेमंत सिंह थे। वहाँ एक भारतीय सभ्यता के सुंदर दर्शन करने का समय मिला। वो ये था कि ऑपरेशन कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा जी का मैसेज एयर में आया कि वी विल एंटर इन ढाका एज ए लिबरेटर नॉट एज ए कॉन्करर, कि हम ढाका के अंदर मुक्तिदाता के रूप में जाएंगे, ना कि विजेता के रूप में। मुक्तिदाता और विजेता में बहुत अंतर है। विजेता आप सब लोग जानते हैं कि भारत में नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये सब विजेता के रूप में आए। और सेकंड वर्ल्ड वार में 1945 में जो जर्मन में रशियन रेड आर्मी जो गई है, उसने जो शर्मनाक वहाँ पर दिखाया है वो आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। तो ये एक भारतीय सभ्यता का नमूना कि एक मुक्तिदाता के रूप में कोई लूट मार नहीं, कोई बुरा काम नहीं, ये एक मिसाल शायद और देशों में नहीं पाई जाएगी। 34 ईयर सर्विस में मैंने दिसंबर 1960 गोवा ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 62 में चाइना के बखलाफ नेफो में हिस्सा लिया। 65 में राजस्थान बाड़मेर सेक्टर में हिस्सा लिया और 1971 में
एज कमांडिंग ऑफिसर 6th गार्ड बांग्लादेश में हिस्सा लिया। मैंने मेरी बटालियन 6th गार्ड के साथ मई 71 में लड़ाई शुरू हुई थी। दिसंबर 71 में मैंने बांग्लादेश का फ्लैग बांग्लादेश में चढ़ाया था। मई 71 में। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा जैसे शादी के बाद अपनी माँ को नहीं भूलते, वैसे अपनी जन्मभूमि भारत को नहीं भूलना। गॉड ब्लेस भारत। जय हिंद। I have taken part in all the wars after 63, that is 1965, where I had a chance to physically go and assault the enemy post. Very few people get a chance of this type, where they lead their own platoons. I was a platoon commander at that time as a 2nd Lieutenant, when I was given the task to capture one of the posts, and we captured it. We captured that. Then in the year 1971, I was part of the Armored Division, and we are the pioneer of mechanization. That is 4th Mech. I am from that unit. We kept playing hide and seek with the Pakistan at that time, though we did not physically get involved into the war itself, but we were always there, alert very much, so that the Pakistanis don't come and attack in our areas. So this is how, you see, we have been spending our life. ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਟਰਨਸ ਲਈ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਸ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਡਬਲ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਨ ਫੋਕਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।